the student. Today we will discuss about our chapter soil. Let's start from the meaning of the soil. Soil is a very important land resource. Its significance lies in its fertility. Infertile soil is not a much used, while fertile soil has always been more important because of requirements met by it. The soil certainly बहुत important land resource है. ਇਹਦੀ significance ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਇਹਦੀ fertility ਤੇ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ soil ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ अच्छी नहीं होती क्योंकि fertile soil ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ needs ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. Human beings have always been to live in fertile plains since their origin. Ancient civilization have also developed in fertile river valley only. कहते शुरू तो ही एंशियंट टाइम तो ही ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ civilization ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ fertile plains ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. Even today, density of population is found in fertile river valley and plains. It is because of its fertile soil that India has been able to produce food for its huge population. कहते even आज भी साडी ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ population है fertile soil ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ river valleys ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਊਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਫॉर ਦੀ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ. Next types of soil. A variety of soil type is found in the world. Types of soil can be classified on a number of bases. क्योंकि जब variety of soil मिलती world ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ classification है numbers ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है. Main classification are made on the basis of their region, texture and climate. Actually, these are the elements that help in the formation of soil and its fertility. कहते जी soil की classification on the basis of region, texture ਤੇ climate ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. कहते soil की formation च help करते हैं. The parent rock formed with the soil has been formed transfer its characteristic to the soil. कहते parent rock जिथे तो soil की formation होती है और next the characteristic soil च आ जाती है. Rivers, glacier and winds also play an important role in this soil formation. Rivers, besides being an important source of water, play an important role in the soil formation also. The river, glacier and wind soil की formation से important role play करते हैं. The world's fertile alluvial soil is found in the river valley and deltas of rivers, which is a great resource for any country. This soil provides food for the major part of the world's population. ਜਿਹੜੀ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਹੈ ਐਲੂਵੀਅਲ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਵੈਲੀ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਡੈਲਟਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਸੋਰਸ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ. ਇਹ ਸੋਇਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫੂਡ ਔਰ ਇਹ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ. Alluvial soil is formed due to the deposition of soil carried out by the rivers. This is one of the most fertile soil found on earth. कहते हैं alluvial soil की deposition देने वास्ते found की जाती है जिथों ये rivers तो लियांदी जाती है. ये जिहड़ी fertile soil है earth surface से बहुत important है. इस soil is also called a deltic soil because it is mainly found in the delta region of the river of northern plain. Soil spread over about 55% of such area is renewed every year. The soil का 55% area every year renewed होता है. Soil formed by the relatively new set of the delta region of the Ganga and Brahma. Next, black soil. This soil is also called river soil. The dark brown soil formed from volcanic rocks on the black soil consists of fine particles preserve moisture for a long time. ये ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल कहते हैं और ये डार्क ब्राउन सॉइल है वॉल्केनिक रॉक्स तो मिलती है और ये जी ब्लैक सॉइल है अपने फाइन पार्टिकल्स और प्रेशर प्रिजर्व करके रखती है मॉइस्चर में. बीइंग यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द कॉटन. दिस इज आल्सो नोन एज कॉटन सॉइल. इट इज फाउंड इन अ हॉट ड्राई एरिया लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड कर्नाटक. नेक्स्ट, रेड सॉइल. Red soil formed from igneous rocks. This soil is found in the hot and relatively hot area of the eastern and southern part of the peninsula. इनकी ਜਿਹੜੀ red soil है igneous rocks ਤੋਂ form ਹੁੰਦੀ है और एक hot area जिन्हें eastern and southern parts से मिलती है. On the excess of iron oxide, it has red color. Although less fertile, its yield would produce with the help of chemical fertilizer. It is found in Tamil Nadu and Orissa. In the excess of iron, ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ
ये जी सॉयल हैगी फीड के वास्ते यूज के वास्ते गुड नहीं हैगी बट ये कैमिकल्स फर्टिलाइजर की हेल्प के नाल अच्छी हो जाती है दिस इज फाउंड इन तमिलनाडु एंड उड़ीसा नेक्स्ट ड्राई सैंडी सॉइल ड्राई सैंडी सॉइल फाउंड इन द desert area of Rajasthan and the Gujarat this soil is also known as desert soil the quantity of the humus in the soil being less it is not useful for cultivation ਜਿਹੜੀ ड्राई सैंडी सॉइल है डेजर्ट एरिया राजस्थान एंड गुजरात च मिलती है और जी ह्यूमस की जी मात्रा होती है वो घट होती है इस करके कल्टीवेशन लिए यूजफुल नहीं होती नेक्स्ट hilly soil rich in the elements of iron this soil is found mainly in the Himalayas this is less deep has a thin layer tea is cultivated in such soil and a place where there is enough rainfall क्योंकि एक रिच एलिमेंट होता आयरन का और ये हिमालयस से मिलती है और ये जी थिन लेयर होती है और टी कल्टीवेशन वास्ते अच्छी होती है नेक्स्ट laterite soil this soil is found in hot and moist region with a heavy seasonal rainfall on account of heavy rainfall and high temperature the upper fertile layer of the soil get dissolved and sink down into the earth क्योंकि लेटराइट सॉइल जी है हॉट मॉइस्ट रीजन से मिलती है जिथे सीजनल एंड हैवी रेनफॉल होंगे और जी अपर लेयर होती फर्टाइल सॉइल की इस सॉइल की वो डिजोल्व हो जाती है अर्थ विच दिस फिनोमेना इज नोन एज लीचिंग एक्सेस ऑफ आयरन ऑक्साइड this soil has red color this soil is unsuitable for cultivation but it is useful in house building purpose it is found in the western Ghat plateau of Chotanagpur and some part of the eastern state and ये soil है cultivation वास्ते suitable नहीं होती but house ਜਿਹੜੇ building वास्ते अच्छी होती है और ये western Ghat Chotanagpur and some part of the eastern states में मिलती है thank you it's all about soil